Hi students, in yesterday class we read the rate of a chemical reactions. Now in this class we solve the numericals of rate of a chemical reactions. Two types of numericals are asked in RBSc board exam. This type questions numericals and this types numericals. Two types of numericals are asked in RBSc board exam. This types numerical and this types numerical. Such as for a reaction, A plus twice B are converted into thrice C. A plus twice B is a reactant and C is a product. The rate of a formation of C at a instance is 10 की power negative 2 mole liter inverse second inverse. Calculate the rate at which A and B are consumed at this instance. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें. तो फर्स्टली A plus twice B are converted into thrice C. Given reaction is A plus twice B are converted into thrice C. A plus twice B is a reactant and thrice C is a product. Means A and B is a reactant and C is a product. In a chemical reaction, when progress the reaction, reactant molecules, the concentration of reactant molecules are decreased and concentration of a product molecules are increased. So we determine the average rate for this reaction. So reactant molecule is decreased, concentration of reactant molecule is decreased and concentration of product molecule is increased. So average rate for this reaction is equal to negative dA upon dt equal to number of moles of B reactant is 2, तो number equal to negative 1/2 dB upon dt equal to C product is formed, so take sign positive. C product is formed, so concentration of product is increased, so it is denoted by positive sign. So positive 1/3 dC upon dt. In this reaction, given the rate of formation of C at a instance is 10 की power negative 2. तो rate of formation given dC upon dt equal to 10 की power negative 2 equal to 10 की power negative 2 mole liter inverse second inverse. In this question, in this numerical, given the rate of C, given the rate of formation of C, so rate of formation of C dC upon dt equal to 10 की power negative 2 mole liter inverse second inverse. After calculate the rate at which A and B are consumed at the instance. Means हमें A और B इस रिएक्शन में A और B कितना कंज्यूम्ड हो रहा है उसकी रेट को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है. तो रेट ऑफ ए कंज्यूम्ड, सो रेट ऑफ ए कंज्यूम्ड ऑफ ए, रेट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ ए, रेट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ ए. तो इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ decomposition and rate of formation both are equal. In a chemical reaction, rate of decomposition of reactant and rate of formation of a product both are equal to each other. Means किसी भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट जितना डिक्रीज होगा प्रोडक्ट है वो उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो दोनों की जो रेट है वो रेट दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी. सो रेट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ ए, रेट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ ए, तो ए के कंज्यूम की रेट इक्वल टू सी के फॉर्मेशन की रेट. तो मींस नेगेटिव dA अपॉन dt इक्वल टू पॉजिटिव रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ कंज्यूम्ड इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू 1/3 dC अपॉन dt.
इक्वल टू 1/3 dC अपॉन dt. Negative rate of A consumed of A equal to rate of formation of A C. Rate of A consumed of A equal to rate of formation of C. In these questions, ठीक है, in this equation dC upon dt equal to tan की power negative 2 mole liter inverse से second inverse. Put the value of rate of decomposition of C. Put the value of rate of formation of C. So means negative dA upon dt equal to positive 1/3 equal to tan की power negative 3 mole liter inverse and second inverse. ठीक है, d negative dA upon dt equal to positive 1/3 into tan की power negative 3 mole liter inverse second inverse. And solve this fingers 1/3 into tan की power negative 3 mole liter inverse second inverse. तो 0.33 into tan की power negative 2 mole liter inverse second inverse. ठीक है, this types of answer obtained means rate of. ठीक है, rate of calculate the rate of A. Calculate the rate of consumed of A. तो rate of consumed of A equal to, ठीक है, equal to 0.33 into tan की power negative 3 mole liter inverse second inverse. Now we calculate the rate of consumed of B. Rate of consumed of B. Rate of consumed of B. तो rate of consumed of B equal to dP upon dt equal to 1/3 dA upon dt. तो rate of consumed of B equal to negative dB upon dt. रेट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव dP अपॉन dt. तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. बोथ आर इक्वल. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. तो नेगेटिव 1/2 dB अपॉन dt इक्वल टू पॉजिटिव 1/3 dC upon dt. Positive 1/3 dC upon dt. We calculate the dP upon dt. ठीक है, we calculate the dP upon dt. तो negative dP upon dt cross multiply the this तो equal negative dP upon dt equal to positive 2/3. The value of dC upon dt, the value of dC upon dt equal to tan की power negative 2 equal to tan की power negative 2 mole liter inverse second inverse. And solve the this numbers 2/3 into tan की power negative 2 mole liter inverse second inverse. So solve the this type of questions. 2/3 so means 0.66 into tan की power negative 2 mole liter inverse and second inverse. This type से means rate of decomposition of B is 0.66 into tan की power negative 2 mole liter inverse second inverse. And rate of decomposition of A is 0.33 into tan की power negative 2 mole liter inverse second inverse. Means these types of questions are put up in the reaction. First questions इस टाइप से सोल्व करेंगे. ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन A plus twice B C A plus twice B is reactant and thrice C is product. तो average rate of chemical reaction equal to negative dA upon dt equal to negative 1/2 dP upon dt equal to positive 1/3 dC upon dt. Rate of average, rate of decomposition, rate of formation of C equal to tan की power negative 2. तो rate of D1,
rate of formation dc upon dt equal to tan की power negative 2 more liter inverse second inverse. So calculate the firstly calculate the rate of consumed of A. Firstly calculate the rate of consumed of A. तो rate of consumed of A negative dA upon dt equal to negative dA upon dt equal to 1/3 dc upon dt. इस टाइप से सोल्व करेंगे. नेगेटिव dA upon dt equal to 1/3 dc upon dt की वैल्यू tan की पावर नेगेटिव 2 more liter inverse second inverse means rate of decomposition of A equal to 0.33 into tan की पावर नेगेटिव 2 more liter inverse second inverse and rate of consumed of B equal to negative dB upon dt equal to negative dB upon dt. Negative 1/2 dB upon dt equal to positive 1/3 dc upon dt. Negative dB upon dt equal to positive 2/3. Cross multiply the तो 2/3 into tan की power negative 2 more liter inverse. Solve this number 0.66 into tan की power negative 2 more liter inverse second. These types of questions are obtained put up in asked in a RDC board exam for a from a chemical rate of reactions. Next exercise. Next questions. For a chemical reaction, twice A plus B are converted to twice C. The starting concentration of C is 0.4 mole liter inverse. तो सॉल्यूशन होगा इसका the starting concentration of C is 0.4 mole liter inverse. Starting concentration given. Starting concentration of C. Starting concentration of C is 0.4 mole liter inverse. Starting concentration of C is 0.4 mole liter inverse. Next, after 10 minutes, the concentration of C is obtained 0.8 mole liter inverse. Means last concentration of C equal to 0.8 mole liter inverse. Last concentration of C is 0.8 mole liter inverse. Means time taken for change the concentration. Time taken for change the concentration of C product. Time taken for change the concentration of C product is 10 minutes. Is 10 minutes. Means calculate the average rate या calculate the rate of formation of C. Rate of formation of C. Rate of formation of C. In this question, rate of formation of C equal to positive dC upon dt. Rate of formation of C equal to positive dC upon dt. Means is this type of question we write this type C equal to positive C2 negative C1 upon T2 negative T1. C2 is last concentration of a reactant C and C1 is starting concentration. C2 is a last concentration of C and C1 is a starting concentration of C and D2 minus T1. Last starting time for a chemical reaction is 0 minute and last time means time taken
for change the concentration of a C product equal to 10 minutes. So C2 equal to 0.8, C2 equal to 0.8 and C1 equal to 0.4 upon time taken for reaction equal to 10 minutes, equal to 10 minutes, तो equal to 0.4, ठीक है, upon 10 minutes. Solve the these numbers, 0.8 negative 0.4 upon 10, तो equal to 0.4 upon 10. Solve the these numbers. Solve the this numbers. इस टाइप से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे तो 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड मिनट इनवर्स 0.04 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. नेक्स्ट पॉइंट, also calculate the rate of decomposition of A. So means rate of decomposition of A. Rate of decomposition of A equal to negative dA upon dt. Rate of decomposition of A equal to negative dA upon dt. Rate of formation of a chemical reaction equal to rate of decomposition of a chemical reaction. Rate of formation of reactant equal to rate of decomposition of a rate of formation of a product is equal to rate of decomposition of a reactant. Means for average rate for this reaction, average rate for a chemical reaction, ठीक है, एवरेज रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन इक्वल टू -1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू B is a reactant, so it is also decomposed, sign negative, number of moles of B is 1, तो negative dB upon dt equal to C is a product, so it is formed and number of moles of product is 2, positive 1/2 dB upon dC upon dt. It is a average rate of this chemical reaction. Now we calculate the rate of decomposition of A. Now we calculate the rate of decomposition of A. So rate of decomposition of A is equal to rate of formation of C. Rate of decomposition of A equal to rate of formation of C. Negative 1/2 dA upon dt equal to positive 1/2 dC upon dt. Negative 1/2 dA upon dt equal to positive 1/2 dC upon dt. Now we calculate the rate of decomposition of A to dA upon dt. To negative dA upon dt. Cross multiply the terms equal to 2/2 dC upon dt. 2/2 dC upon dt and the value of dC upon dt. The value of dC upon dt equal to 0.04 mole liter inverse meter minute inverse. So negative dA upon dt equal to 2 upon 2. It is cancelled. तो value negative dA upon dt equal to the value of dC upon dt equal to 0.04 mole liter inverse sec minute inverse. Solve the question. Equal to 0.04 mole
liter inverse, minute inverse. Minute inverse. These two types of questions numericals are asked by RBSc board in board exam. These types and invent these types. Now we study the next topic, rate constant. Rate constant and unit of rate constant. Rate constant and unit of rate constant. Rate constant and unit of rate constant according to law of mass action. According to law of mass action. According to law of mass action for a chemical reaction. According to law of mass action for a chemical reactions, rate of chemical reaction. Rate of a reaction. Rate of a reaction proportional to concentration of a reactant. According to law of mass action, rate of a chemical reaction. Rate of a chemical reaction proportional to concentration of a reactant. According to law of mass action, rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of a reactant. Concentration of a reactant. So what is rate constant? What is a rate constant? So according to this reaction, rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of a reactant, means in a chemical reaction. In a chemical reaction, rate constant of a chemical reaction is a square. Okay, it's a square of a product of active mass of product of a reactant molecule. For explain, we take an example. X A plus Y B are converted into product. Okay, we determine the rate constant for this reaction. We determine the rate constant for this reaction. Firstly, we calculate the rate of reaction. So firstly, we calculate the rate of reaction for this reaction. So rate of reaction proportional to concentration of reaction. So rate of reaction dC dx upon dt. dx या dC upon dt. It is a rate of chemical reaction. dC upon dt. तो positive negative dC upon dt proportional to concentration of reactant. A is a reactant and B is a reactant. So it is right in a bracket. Concentration is right in bracket. A की power x and B की power y. A की power x and B की power y. तो dC upon dt proportional to A की power x and B की power y. A power x and B power y means remove the proportional to dC upon dt equal to, okay, take a constant k, okay, A की power x and B की power y, and here k equal to proportional constant. Here k equal to proportional constant, also called rate constant. Rate constant. K equal to proportional constant. We remove the proportional, so it is right. We remove the proportional, so take proportional constant k. K equal to proportional constant or a rate constant. In this reaction, concentration of A and concentration of B both are 1. If A की power x and B की power
y both are 1. If a की power x and b की power equal to 1, then dc upon dt equal to k. dc upon dt equal to k means rate of a chemical reaction is proportional to the rate constant is equal to the rate constant of a chemical reaction. In a chemical reaction, rate constant of a chemical reaction is equal to the rate of a reaction. Rate of reaction of a chemical reactions dc upon dt equal to k. Okay, it is a rate constant of a chemical reaction. It is a rate constant of a chemical reaction. Now we determine the unit of rate constant. Now we determine the unit of a rate constant. Firstly, what is rate constant? According to law of mass action, rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of a reactant. So we explain the rate constant by a examples. Examples A for a reaction X A plus YB are converted into product. Okay, for this reaction rate of chemical reaction dc upon dt proportional to the concentration of reactant. A and B both are reactant, so it is right A की power x and B की power y. dc upon dt equal to, remove the proportional constant, proportional to proportional, right proportional constant k A की power x and B की power y. Here k equal to proportional constant or rate constant. If A की power x and B की power y both are 1, then dc upon dt equal to k means rate constant of a chemical reaction is proportional to the rate of a chemical reaction. Rate constant of a reaction is proportional to the rate of chemical reaction. Now we determine the unit of a rate constant. Now we determine the unit of a rate constant. Unit of rate constant. Unit of rate constant. Unit of a rate constant. So what is unit of rate constant? So for determine the unit of rate constant, we determine the unit of a rate of reaction. Unit of rate of chemical reaction equal to mole liter inverse and time inverse. Mole liter inverse and time inverse. Unit of a rate of chemical reaction equal to mole liter inverse and time inverse. Now we calculate the unit of rate constant. Now we calculate the unit of rate constant for this reactions. Reaction is X A plus Y B plus Z C are converted into product. Determine the unit of rate constant for this reaction. We determine the unit of rate constant of this reaction. Firstly, in this reaction, rate of chemical reaction is proportional to the concentration of a reactant molecule. dc upon dt, it is a rate of a chemical reaction. dc upon dt equal to rate of a chemical reaction is proportional to concentration of a reactant. A की power x, B की power y and C की power j. dc upon dt proportional to A की power x, B की power y and C की power j. Remove the proportional and write the proportional constant. dc upon dt equal to k A की power x, B की power y and C की power j. Here A, B and C are concentration of a reactant molecule. Here A,
B and C are concentration of a reactant molecule. So dC upon dt equal to K कंसंट्रेशन की पावर x, कंसंट्रेशन की पावर y, कंसंट्रेशन की पावर z. Here bracket A, bracket B and bracket C are concentration of reactant molecule. Concentration of reactant molecule, so it is right these types. कंसंट्रेशन की पावर x, कंसंट्रेशन की पावर y एंड कंसंट्रेशन की पावर z. मींस इसको इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि A, B एंड C तीनों यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. तो कंसंट्रेशन को हम राइट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की A कंसंट्रेशन की पावर x, B कंसंट्रेशन की पावर y एंड C भी क्या है, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, z. तो मींस dC अपॉन dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन है उसकी पावर x प्लस वाई प्लस z. ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर x, कंसंट्रेशन की पावर y, कंसंट्रेशन की पावर z. तो मींस x प्लस वाई प्लस z. तो dC अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई प्लस z. हियर dC अपॉन dt यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. तो dC अपॉन dt इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई प्लस z. dC अपॉन dt यूनिट ऑफ dC अपॉन dt मींस यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टाइम inverse. So put the unit of dC upon dt equal to mole liter inverse and time inverse equal to k concentration की power x plus y plus z. Here mole liter inverse is a unit of concentration. Here mole liter inverse is a unit of a concentration, so it is also right concentration टाइम का इनवर्स. कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई प्लस z. कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई प्लस z. कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई प्लस z. टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k equal to determine the unit of rate constant k equal to concentration. ठीक है, k equal to concentration time inverse upon concentration की पावर x plus y plus z. कंसंट्रेशन की पावर x प्लस y प्लस z. ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर x प्लस y प्लस z. तो कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे. ठीक है, तो k इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर नेगेटिव x प्लस y प्लस z. कंसंट्रेशन की पावर -1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z. टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन की पावर x प्लस कंसंट्रेशन की पावर 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z. ठीक है, इनटू टाइम इनवर्स. वी सॉल्व k इक्वल टू, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स. कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स. पुट द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. तो k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 नेगेटिव x प्लस वाई प्लस z टाइम इनवर्स. सोल्व द दिस टाइप ऑफ k इक्वल टू मोल 1 नेगेटिव
x प्लस y प्लस z, वन नेगेटिव x प्लस y प्लस z, वन नेगेटिव x प्लस y प्लस z लीटर, नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, वन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x प्लस y प्लस z टाइम इनवर्स. It is a unit of rate constant for this reaction. It is a unit of rate constant for this reaction. K equal to mole one negative x plus y plus z liter negative one plus x plus y plus z time inverse. We again explain. दोबारा इसको देखो इधर. Unit of rate constant. Unit of rate constant of a chemical reaction equal to mole liter inverse time inverse. We determine the rate constant of a chemical reaction, so we take a examples. We take a chemical reaction and explain by example. So we take a chemical reaction xa plus yb plus zc are converted into product dc upon, so rate of chemical reaction dc upon dt proportional to the concentration of reactant molecules, तो proportional to a की power x, b की power y and c की power z. Remove the proportional, so take we write the proportional constant dc upon dt equal to k, a की power x, b की power y and c की power z. dc upon dt equal to k, here a b and c. ठीक है, टोटल आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो राइट द कंसंट्रेशन k इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर x, कंसंट्रेशन की पावर y, कंसंट्रेशन की पावर z. dc अपॉन dt इक्वल टू k, कंसंट्रेशन की पावर x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z मींस unit of it dc upon dt equal to mole liter inverse time inverse equal to k, concentration की power x plus y plus z. Mole liter inverse is called a concentration. Mole liter inverse is a unit of concentration. तो concentration time inverse equal to k, concentration की power x plus y plus z. We determine the rate of rate constant of k, तो k equal to concentration into time inverse upon concentration की power x plus y plus z. कंसंट्रेशन की पावर x प्लस y प्लस z, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सारी की सारी टर्म्स किस में चली जाएगी, नेगेटिव. तो k इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z इनटू टाइम का इनवर्स. k इक्वल टू कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, तो k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, इसकी पावर 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z एंड टाइम इनवर्स. सो द k इक्वल टू मोल की पावर 1, तो 1 इनटू 1, ठीक है, 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z लीटर इनवर्स, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x प्लस y प्लस z एंड इनटू टाइम इनवर्स. इट इज ए यूनिट ऑफ ए रेट कांस्टेंट ऑफ ए दिस रिएक्शन. इट इज ए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए दिस रिएक्शन. नाउ वी गिव ए एग्जांपल फॉर कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट of a chemical reaction. Now we give example of calculate and determine the rate unit of rate constant of this reaction. Calculate the unit of rate constant of this reaction. Reaction is 5Br negative plus BrO3 negative plus 6H positive are converted into thrice Br2 plus thrice H2. हमें इस रिएक्शन है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिटरमाइन करना है, ठीक है. ये जो केमिकल रिएक्शंस है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट है, उसको हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है. तो वही dc अपॉन dt, या अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था k इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल,
ठीक है, उसकी पावर 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z लीटर, ठीक है, -1 पॉजिटिव x प्लस y प्लस z टाइम इनवर्स, x प्लस y प्लस z टाइम इनवर्स। हियर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 मोल, y इक्वल टू 1 मोल, z इक्वल टू 6 मोल। x इक्वल टू 5 मोल, y equal to 1 mole and z equal to 6 mole. Put the value of x, y and z in a formula. Put the value of x, y and z in this formula. So k equal to mole 1 negative 5 plus 1 plus 6 moliter 1 negative positive 5 plus 1 plus 6 time inverse. So the numbers k equal to mole 1 negative 5 plus 1 plus 6 12, 1 negative 12 liter -1 plus 12 and time inverse k इक्वल टू मोल की पावर नेगेटिव का 11, सोल्व दिस इक्वेशंस, लीटर पॉजिटिव का 11 एंड टाइम इनवर्स। इट इज ए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ रिएक्शंस हैं, उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको डिटरमाइन करनी है। N2 plus thrice H2 twice NH3, इसके लिए आपको रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट है, उसको डिटरमाइन करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास H2 plus 1/2 twice H2 plus 4/2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस H2, और इस रिएक्शन है उसमें भी आपको रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट को डिटरमाइन करना। और कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम ये दोनों रिएक्शंस है उसको, उसकी यूनिट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो प्रैक्टिस दिस रिएक्शंस एंड कैलकुलेट डिटरमाइन द रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल फॉर next upload my video and study the regular. Thank you.